Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. वो कल लास्ट का जो आंसर था ना, सेशन एंड करने तक मेरा दिमाग में आ गया था। वो तो ग्रुप में मैंने लिख दिया था आंसर क्या होगा। वो शिफ्टिंग होगा, वैल्यू डायरेक्ट नहीं बसेगा, वो शिफ्ट होगा। तो आज बता दूंगा क्लियर। So now we start today's class. Basically, we are in the classification of different properties. Okay, so we are at seven number of classification properties. That is frequency shifting property. So today I am just discussing once again. My voice is clear. तो कुछ दिक्कत होगा तो बोलिए. So now suppose we are having the signal xt that is having Fourier series coefficient ak. Now you are multiplying xt with complex exponential factor that is having fundamental frequency omega naught. That should be maintained. So e to the power j m omega naught t, where omega naught is the fundamental frequency and m is an integer. So then we are getting Fourier series coefficient as bk. Now what is bk? How to get bk? What is the expression to have bk? So bk is equal to ak minus m. So that means k minus m, that is the shifting. जैसे मान लो in impulse response del of t minus t naught. So that is called shifting property. Okay, so that shifted the whole strength shifted to t naught positions. Okay, so similarly here your ak, where the ak is situated, that will shifted to, okay, that will shifted to k minus m position, where right or left, right side position. So that will shifted to right side position. If k plus m, that means your coefficient shifted to the left side position, k plus m. So in that way you have to find out. So already we have discussed all these things. The signal is cos omega naught t, omega naught is pi by 4 here. So representing cos pi by 4 as complex exponential here, ultimately the value of k is here 1 and value of k is here minus 1. So definitely a1 is equal to half, a minus 1 is equal to half. We got that values. So we have plotted here ak versus k graph. So plus 1 position half, minus 1 position half. So this is for your xt. Now we are going to find out x1t. So x1t is equal to e to the power j m omega naught t, e to the power j m omega naught t into xt. So m का वैल्यू इधर क्या है, 1 है. Okay, and omega naught is pi by 4. So we are multiplying as a whole and we are getting these sort of expressions. So here the value of k is 2, here value of k is 0. So ultimately from there b2, you can say b2 and b0 is some time of that. K is equal to half में, k is equal to 2
we are getting half because यहाँ पे k का value 2 है, so the coefficient is half, so half is there. K is equal to 0, so b0 is how much? Half. So we have plotted in bk versus k graph. So this is your representation, coefficient representation of the final expressions. Okay, so now you have to find out what is the relation between the previous one and the later one. This is xt, coefficient of xt and coefficient of x1t. So this is the way directly we can plot coefficient what we get from x1t. Now we have to use the formula. We have to use the formula. So that means यहाँ पे m का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 1 है, ठीक है, m का वैल्यू 1 है, ठीक है. तो xt having the coefficient, listen carefully, x1t that is equal to e to the power 1 e to the power j into 1 into pi by 4 into t into xt, that is ak minus 1. Why it is ak minus 1? ak minus m का वैल्यू 1 है. तो थिंग इज दैट ए के माइनस 1 का मतलब क्या है? दैट मीन्स वट एवर बी द वैल्यू ए के, दैट विल शिफ्ट राइट साइड बाय हाउ मच पोजीशन? 1 यूनिट पोजीशन. लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ak? ak is the coefficient of xt. Now we got the coefficient of x1t, that is ak minus 1. So what is the relation between ak and ak minus 1? So ak minus 1 means previously you are having ak. So when you are showing ak minus 1, that means your ak will shift right side by 1 unit position. So 1 unit shift होगा right side में. तो ये था तुम्हारा ak. Okay, that is your ak. Please listen carefully. So you have to shift it how much? ak minus 1. So the total waveform will shift 1 unit position to the right. So ये plus or minus 1. So 1 unit position. This is the gap is 1. So where the position of the half will be there? At 0 position, because it moves 1 unit to the right side position. Listen carefully. Because bk is equal to ak minus 1. ak minus 1 का मतलब क्या है? The ak where it's situated, that will shifted 1 bit position, 1 unit position to the right side. So 1 unit right side shift होगा तो ये ak का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. और ये कहाँ जाएगा? 1 यूनिट राइट साइड होगा तो 2 में चला जाएगा. तो इसलिए जो -1 में था वो 0 में आ गया और जो +1 में था वो 2 में चला गया. So that is the way, not directly you add the value of k and the value of m. That will be very wrong concept because it's a shifting property. So that as a whole impulse will shifted to the right side position by how much? 1 unit. If it was k plus 1, so as a whole ak will shift to the left side position. Okay, so left side में तब क्या होता? ये -2 में चला जाता और ये 0 में आ जाता. Completely reverse of that if it is k plus 1. So in that way, that's why I've written 1 unit right side shift, 1 unit right shift. Okay, so that's why if you make it right shift by 1 unit, then what will happen? -1 0 में आ जाएगा, +1 जो था वो 2 में चला जाएगा. इसलिए k is equal to 0 में हाफ हो गया और k is equal to 2 में हाफ हो गया. So this is all about your frequency shifting property. That's why I've written over there using frequency shifting property. Now if you have any doubt, I can clear your doubt. So the thing is that you remember in your mind, so ak minus 1, suppose ak minus 2, what does it mean? So that means your ak, whatever the graph, that total waveform will be shifted 2 unit right side. Okay, so 2 unit right side shift हो जाएगा. If it is k plus 2, so as a whole ak graph will be shifted left side position by how much unit? 2 unit. So that is the thing here. Okay, so that is your frequency shifting property. Now you having doubts, so you can ask me. I will again repeat it. Otherwise move to the 8 number properties, that is multiplication property. So
Let us examine the multiplication property here. Xt having the Fourier series coefficient ak. So when you are going to multiply, you need to have two signals. So xt and yt. Xt का coefficient ak, yt का coefficient bk. So now you have another function, that is zt, which is nothing but multiplication of the above two, xt dot yt. Now let us assume the coefficient of this multiplicative signal is ck. Now how to get ck? How to find ck? How to have the values of ck? That you have to understand. So ck is equal to should be ak convolution bk. So AK convolve with BK. So this is discrete convolution here. Because AK and BK, listen carefully, all are discrete values, not continuous. Because when you are plotting any AK or BK, see here, these are the discrete values, isn't it? AK, BK, whatever. The coefficient basically representing discrete K values in discrete waveform. So it's a discrete in nature. So that's why discrete convolution will be there. So we use matrix method. That is the simpler one. Okay. So that is the simpler one. So AK we have, BK also we are having. So now we will generate CK by means of convolution between AK and BK, and we'll use matrix method or the tabular method. Matrix method convolution. So for that we'll take one example. Okay, xt is equal to 5 plus 2 sine 4 pi t, that is your xt. Yt is equal to 6 cos 6 pi t plus 4 sine 2 pi t. So that is we have taken the signals. So you can have another equation also. Now you have to multiply xt and yt. So we are multiplying xt and yt. Now we have to find out ck. What is the value of ck? So that is why question mark. So we know that what is the fundamental frequency for multiple frequency, multitone? It's a multitone. See, single, second, third. So three frequencies are there. So you have to find out the fundamental frequency among these three. So you people know the AC of individual frequency. We got that one previously. So यहाँ पे क्या है 4 pi है. यहाँ पे क्या है ओमेगा नॉट 1, omega naught 2 6 pi, and omega naught 3 you can say 2 pi. So 4 pi, 6 pi and 2 pi you have to make HCF. So highest common factor, what is the highest common factor? Yes, 2 pi. 2 pi is the, that is 2 pi by 2 pi 1, 2 6 pi by 2 pi 3 pi 4 pi by 2. 2 pi is the highest common factor here. So omega naught should be 2 pi radian per second. So you have to make the HCF of individual angular frequencies. So ultimately we got the fundamental frequency. 2 pi is your fundamental frequency. So now xt you have to make it complex exponential term. So xt is 5 DC term. Okay, no frequency at all. Omega naught here 0 here. This is having the 0 frequency. यहाँ पे क्या होगा sin, so 2 by 2j because 2 is there. So 2 by 2j e to the power j 4 pi t, 4 pi t minus 2 by 2j e to the power minus j 4 pi t. So it's a complex exponential. Every time we are doing that one, sine and cosine. So यहाँ पे you have to find out the coefficient for xt, isn't it? You have to find out the coefficient of ak. You, in the same way you have to find out the coefficient of bk from yt. तो यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट इज 0, सो दैट इज योर डीसी वैल्यू. सो a0 इज इक्वल टू 5 हियर. नाउ देखो k का वैल्यू कितना है यहाँ पे? k का वैल्यू कितना है बोलो प्लीज टेल मी एनीवन फ्रॉम योर साइड. 4 पाई t है. 4 sir. तो नहीं 4 पाई नहीं है कि ओमेगा नॉट 2 पाई है. सो 2 into 2 पाई इजंट 2 ओमेगा नॉट t. सो k का वैल्यू 2 होगा. 4 पाई तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 पाई है. So इसलिए 2 into 2 pi t. So that's why k omega naught t, the value is j k omega naught t. तो k का वैल्यू इधर क्या होगा 2 होगा because 2 pi is your fundamental frequency. So k का वैल्यू 2 है. So इसलिए k इधर -2 होगा. So 2 by 2j 2 to cancel out और 1 upon j हो जाएगा. So a2 is equal to 1 upon j. So 1 upon j का मतलब क्या है -j. If you multiply both sides upper and lower by j, so above will be j and lower will be j square. And the value of j square is -1. So that's a minus j we are having. a2 is equal to minus j. Similarly, a minus 2 will be plus j. So we got ak values. Okay, we got 0, k is equal to 0, k is equal to 2, k is equal to -2. So that means +1 and -1 mean we don't have any values here.
Okay, so we represent this as discrete sequence. Okay, discrete sequence will write. So here I have written that. So that 5 value representing your origin, k is equal to naught. Okay, so one value में क्या है, जीरो है, we don't have any values. K is equal to 2 में क्या है, minus j है. K is equal to 3 में क्या है, जीरो है, we don't have any values. Similarly, k is equal to minus 1 में कितना value है, no value is there, so zero. K is equal to minus 2 में कितना है, j, so we have written, so that should be plus j. Okay, I have written here minus j, that should be plus j. Okay, because k is equal to minus 2, then we are having plus j, so that should be plus j. And k is equal to 3 में क्या होगा, minus 3 में, that will be 0. So we got ak values in the discrete form. Okay, so remember there's minus j the left side, that should be plus j, because we get here plus j. So slip of pen is there. So now we have to find out step 2 में. Okay, step 1 में we got ak values. Okay, step 2 में we will find out bk values. So in the same way, I am not repeating it once again, because you people aware about that, how to get the coefficient from any cosine series. So because you are having yt is equal to 5, sorry, कहाँ गया, yt is equal to 6 cos 6 pi t plus 4 sin 2 pi t. तो ये people मालूम है तुम्हारा, तो k का वैल्यू इधर क्या होगा, 3 5, so 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, so 1 होगा. So in that case, that is minus and plus 1 we have. So in that way, it's 6 by 2 e to the power j 6 pi t plus 6 by 2 e to the power minus j by. So we have made complex exponential terms. So here we are having two cosine series, cos and sin. So इसके लिए two exponential term, इसके लिए two exponential term, कुल मिलाकर 4 exponential term होगा. So देखो 4, 1 2 3 and 4, we are having 4 exponential terms. So देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 by 2, so it will be 3. So what is the value of k here, 6 pi. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 2 pi है, तो k का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, करेक्ट. तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा. सो b3 is 3, b minus 3 is 3. ओके, सो नाउ हियर देखो k का वैल्यू कितना होगा, 2 pi है, 2 pi is your fundamental frequency. सो k का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा. सो k का वैल्यू 1 होगा, तो b बोलो. 1 सर बोला सर. हाँ हाँ, ओके. सो b1 इज इक्वल टू 4/2j. तो 4/2j का मतलब क्या है, ये -2j हो जाएगा, क्योंकि 4/2 तो 2 होगा, एंड 1/j मतलब -j होगा. सो -2j, और b -1 के लिए 2j हो जाएगा. सो वो जो पोजीशन हमको मिला है, वी हैव रिटन ओवर देयर, एंड विद दैट रेंज इफ यू डोंट हैव एनी वैल्यूज, सो पुट देयर जीरोस. करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में तुमको जीरो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 का वैल्यू है, 0 का वैल्यू नहीं है, 2 का वैल्यू नहीं है, -2 का वैल्यू नहीं है. तो इसलिए देखो 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है. -1 पोजीशन में देखो, +1 पोजीशन में देखो -2j है, और -1 पोजीशन में क्या है, +2j है. ओके, सो सिमिलरली b2 और b-2 0 है, और b3 में क्या है, 3 है, एंड b-3 में 3 है. सो वी गॉट the bk values, and origin is at k is equal to 0. So we got ak and bk, and we use the matrix method to find out the. देखो यहाँ पे मैंने प्लस जे लिख दिया, पहले वो क्या था, स्लिप ऑफ पेन हो गया, ये प्लस जे होगा, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. सो ak is equal to 0j 05 I have written over there, bk also I have written over there, so you know very well. So please practice all those things. Today is your last class, after that we meet after your mid semester. So whatever we covered, you please complete all those things by studying all during this period. So bk ak, okay. So मैंने बोला ना प्रियस का पहला दो जो प्रॉपर्टीज है, up to that much the question will come, because after that I will not give you the question in this semester, in this mid semester, second mid semester में हम देखेंगे. तो ये देखो बीके है इधर 3 0 2j 0 -2j 3 3, इधर क्या है 0j 0, जो है वैल्यू हम लिख दिया, और एरो दे दिया 0 पोजीशन की इंडिकेट करने के लिए. तो इधर 3 वैल्यू है, इधर भी 3 वैल्यू है, ठीक है. तो प्रोसेस क्या है, 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा, सो 3 0 3j, so 3 will be multiplied with total horizontal values, total ak values. So you multiply 3 with all those values, we are getting this. This is the way, simple way. 0 with all those, so 0 will be there.
2j you multiply all the values, so we'll get these values. So 0 is there, so if you multiply 0 with some value, so that will be return will be 0, so return is 0. 2 minus 2j के लिए 2j के लिए जो मिला minus 2j के लिए just reverse will happen, the negative will be at the right side. So 0 के लिए 0 and 3 के लिए देखो यहाँ पे जो था 3 के लिए देखो 30 3j 015 जो है वो मिल गया. तो इससे सिंपल प्रोसेस, you multiply each and every terms. Now you have to group, you have to make a group. So 0 वैल्यू सेकंड पोजीशन में 0 3j है, फिर क्या है ये 0 30 है, ये वाला है. सो हर एक ग्रुप में देखो diagonally we have making a group. So after making your groups, what do? You have to add all those values. So 0 only है, so 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो 0. now देखो 0 plus 3j क्या होगा, 3j होगा, तो 3j हो गया. now देखो all zeros, so 0 हो जाएगा. now देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 minus 2 0 15, तो क्या होगा 0 minus 2 plus 0 plus 15, तो क्या होगा 13 होगा. देखो प्लस 13 हो जाएगा, तो ये प्लस 13 हो गया. फिर भी यहाँ पे देखो 0 है, ऑल जीरोज, 0 plus 0 plus 0 plus 0, सो कुल मिलाकर क्या होगा 0 होगा. नाउ यू सी 0 plus 2 plus 0 plus 10j minus 3j, तो क्या होगा 10 से 3 जाएगा तो 7j हो जाएगा. 9 सर. 10 से 3 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 2 plus 7j, so 2 plus 7j, correct, 2 plus 7j. So in that way you add all the values, you add all the values in a group and you write down. So ultimately we get how much values देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. okay. So 7 plus 7, तो n1 plus n2 minus 1 होता है ना. टोटल लेंथ, इफ ak का वैल्यू n है, लेंथ bk का वैल्यू n है, सॉरी ak का लेंथ n1 और bk का लेंथ जब n2 होगा, सो जब तुम्हारा कन्वोल्यूशन जो रिजल्ट होगा उसका क्या होगा, लेंथ n1 plus n2 minus 1 हो जाएगा. तो 7 plus 7 14 minus 1 13. So how many number discrete numbers are there? 13. ना ओरिजिन कहाँ होगा, देखो ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 3 बिफोर, सो 3 plus 3 plus 1, सो दैट इज 7 हो जाएगा. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन में हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज द कंडीशन वेयर यू विल चूज द ओरिजिन. ये देखो लेफ्ट में कितना वैल्यू 3 है, इसका लेफ्ट में कितना वैल्यू है 3 है, सो 3 plus 3 6 plus 1 7 हो गया. So position of the origin. So that is your CK. So in that way, if you know the coefficient of one signal and you know the coefficient of the other signal, then if that both the signals are multiplied, then you can easily find out the coefficient. So मतलब क्या है, जब टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है उसका कोएफिशिएंट कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो जाता है. ठीक है. So after convolution we are getting these values. So if having doubt you can ask me, otherwise move to the 9th properties, Parseval theorem. So Parseval theorem के बाद में हम लोग और डिटेल करेंगे. So we'll discuss little bit here. Parseval theorem का मतलब क्या है, देखो mathematically I have written over there. Power का मतलब क्या है, limit t tending to infinity 1/2t minus t to plus t mod of xt square dt. We have done so many numerical problems using this power signal and thus energy signals. During that we have got the power relation. So that is the way directly we can measure the power. Otherwise you can have the power k is equal to minus limit to plus limit to all mod of ak square. मतलब क्या है, ak का मतलब है कोएफिशिएंट. सो xt में जितना जितना तुम्हारा कोएफिशिएंट है उसका पावर को ऐड करोगे तो तुम्हारा पावर मिल जाएगा. ठीक है. जितना जितना तुम्हारा हार्मोनिक्स है. ओके. एक का मतलब क्या है, जब एक के का वैल्यू 0 होगा तो वो फंडामेंटल होगा, के दैट इज योर 0 डीसी वैल्यू होगा. के इज इक्वल टू 1 तो वो फंडामेंटल होगा. के का वैल्यू 2 तो सेकंड हार्मोनिक्स, के का वैल्यू 3 तो थर्ड हार्मोनिक्स. सिमिलरली माइनस 1 आल्सो. तो जो जो तुम्हारा हार्मोनिक्स है
So all harmonics of power, and if you add them, take their square and add them, so you will get the power. So let us take one example. So that's why I have written over there the total average power in any periodic signal. You people know that when we go for Fourier series analysis, the signal must be a periodic signal. Everything is available only the signal is periodic. So that all the criteria should be fulfilled, otherwise not. So total average power in any periodic signal is always equal to the, देखो मैंने लिखा equal to the sum of average power containing all its harmonic components. So जितने तुम्हारा harmonic components है उसका sum हो जाएगा. So let us take one example. ये है कि हाँ we got one example. तो xt क्या लिया मैंने, तो ये बोलो, ये जो मैंने फॉर्मूला बोला है तुमको, जस्ट बताया, इज देयर एनी डिफिकल्टीज? ये तो पावर हम लोग निकल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. we had so many numericals over there. So that is here using the Parseval theorem, it states that जितने तुम्हारे पास हार्मोनिक्स है, you find out the individual power and add them. Okay, and add them. So take one example that will be better for you. Xt is equal to cos omega naught t. I have taken the very simple one. Very simple one, बाबू. तो cos omega naught is the fundamental frequency here. तो बोलो इसका पावर कितना होगा? Tell me anyone from your side. What should be the power of that signal? Okay, what should be the power of that signal without going integration? Integration का तो फॉर्मूला है, you can put over there. So मैंने बोला था कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कुछ स्टैंडर्ड साइनसॉइडल कोसाइन ट्रायंगुलर का है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. a square by 2, a square by 3. ये सब मॉडल हाँ, भी a पढ़े square हैं by सर. 2. यस यस, a square by 3. तो कोसाइन साइन के लिए क्या होगा? एम्पलीट्यूड आरएमएस वैल्यू होता है ना. ये सब मॉड्यूलेशन. करेक्ट. मॉड्यूलेशन में तुम पढ़ चुके हो, मैंने भी बोला, मैंने भी एग्जांपल किए हैं बहुत सारे. तो ये सब वैल्यू फाइंड करने से ए स्क्वायर आता है करियर से. करेक्ट. तो ठीक है, तो ये cos ओमेगा नॉट t, तो एम्पलीट्यूड क्या है बाबू यहाँ पे 1 है. सो इस 1/2 हो जाएगा. सो दैट वी गॉट डायरेक्टली. नाउ स्टेप 1 में ये मिला. स्टेप 2, xt इज इक्वल टू, इफ यू राइट इट एक्सपोनेंशियल साइन कोसाइन सीरीज, तो हम लोग इजीली वी कैन राइट दैट वन. सो यहाँ पे देखो ये a1 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा a-1 मिल जाएगा. सो वी गॉट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच एंड एवरी हार्मोनिक्स. समझ गए ना बाबू? तो we have to find out how much harmonics are there, that you have to find out. That is the first and foremost thing. So a1 मिल गया हाफ, a-1 मिल गया माइनस हाफ. तो तुम्हारा यहाँ पे कितने हार्मोनिक्स है? हार्मोनिक्स तो नहीं है, तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक बार 2 है, a1 है, a-1 है. तो मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, इसका जो साम हो जाएगा, k का वैल्यू -1 होगा, +1 होगा. So according to the Parseval theorem, we can write k is equal to -infinity to +infinity mod of a square. So that should be a1 square plus a-1 square according to the Parseval theorem. तो हाफ का स्क्वायर हो जाने से क्या हो जाएगा? 4. इसका देखो, इसका जो स्क्वायर होगा इसका भी 4 हो जाएगा. ये माइनस हाफ नहीं होगा, ये प्लस ही है, तो हाफ हो जाएगा. तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 2 into 1/4, दैट इज हाफ वाट. तो वो मिल गया हाफ वाट. सो इट्स अ सिंपल वन, हेंस द पार्शियल थ्योरम इज प्रूव्ड हियर. से a माइनस उसका वैल्यू -1/2 होगा या फिर +1/2 होगा? ये बाबू प्लस हाफ होगा, ये माइनस नहीं है. ये देखो कोएफिशिएंट प्लस है, लिखने में हो गया, स्लिप ऑफ पेन हो. इट शुड बी हाफ. ओके, लिखने हम जब प्रैक्टिस करते हैं लिखने के समय हो जाते हैं, बट लेकिन व्हेन आई एम टेकिंग योर क्लास आई रेक्टिफाइड ऑल दोस थिंग्स, टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. So that should be a+1 भी हाफ है, a-1 भी हाफ है, बिकॉज यहाँ पे देखो प्लस है. ठीक है ना, ये प्लस है तो कोएफिशिएंट प्लस होगा. तो ये माइनस होता तो रिजल्ट सेम ही होता, क्योंकि मॉडुलस स्क्वायर है. तो बिकॉज दिस इज नॉट -1, बेसिकली इट्स प्लस हाफ, +1/2 is equal to +1/2. तो अल्टीमेटली हाफ वाट मिल गया. So that is your Parseval theorem. If time permits, we'll go for some different numerical also. So what we have calculated up to this. So we are dealing with till now with the exponential Fourier series, isn't it? Exponential Fourier series. Okay.
So we now move to the sine cosine Fourier series. Okay, we move to the sine cosine Fourier series right now. So before that, we'll take few examples to clear out your basic knowledge. You people, if you observe that, you will see my lecture. I will give you more and more examples to for the betterment. Okay. नहीं तो क्या होता ना, one formula one problem, one formula one problem होता तो हमारा syllabus आज खत्म हो जाता. इसलिए we are taking much time to cover the syllabus. So if that may happen, time is limited, but we have to cover more syllabus, then you have to give more time to me. We arrange extra class. Okay, and you have told me earlier classes, sir, I will give you the extra class, so you carry on as your own choice. So that's why I have taken so many numericals here because ये numerical based problem है. So ज़्यादा से ज़्यादा numerical यहाँ पे practice होगा तो तुम्हारा बेसिक नॉलेज भी अच्छा होगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते ना इधर सिग्नल सिस्टम के लिए वो तुम्हारा गेट में भी ये कवर होगा. Not only I am covering you GUP syllabus, but also I am taking little bit focus on your GATE exam also. So that's why you be more क्या बोला more serious about the subject. You have to be more serious about the subject, and you have to practice all those numericals at home. Okay, for the betterment. So you have to understand everything. So we'll move to the sine cosine series of the Fourier series analysis. So before that, we'll take few examples very quick. So, one thing I have to mention over there. Till now, what we have used every time, that is your synthesis equation. So we never use analysis equations. Okay. So when we use sine cosine series, sine cosine waveforms, देखो every time we have used your synthesis equations. So when we use analysis equations, we will use analysis equation when the signals are not perfect sinusoidal. Listen carefully. I have written over there for the betterment. If the signal is not sinusoidal, then we should use the analysis equation. I mentioned over there. Need not to write here, but I have written so that that thing will be in your mind. So that's why I will take one gate function. This is not a sinusoidal one. So take one gate function. So now see, it's a gate function. Find Fourier series coefficient for the periodic gate pulses in the figure. तो ये है गेट फंक्शन. देखो अच्छा से देखो, ध्यान दीजिएगा ये इधर. तो xt इज द गेट फंक्शन हियर. डोंट वरी, बी कूल. सो यहाँ पे देखो ये एक्सटेंशन कितना है, 0 से स्टार्ट करके प्लस t1 तक, ये 0 से लेकर माइनस t1 तक. सो इसका विड्थ कितना हो गया, इसका विड्थ कितना है, इधर माइनस t1 इधर प्लस t1, सो 2t1 इज करेक्ट. तो ओके. तो देखो ये t/2 है, क्योंकि इसका जो मिडिल है बाबू और इसका जो वेवफॉर्म है, इसका जो मिडिल है, द लेंथ इज t, दैट इज द पीरियड. सो t इज द पीरियड हियर. इसका मिडिल. सिमिलरली इसका मिडिल and this negative side middle, that is your minus t, that is t is the time period here. So ये t है तो मिडिल पोजीशन क्या होगा, t/2 हो जाएगा. Okay, these are simple one. Okay, you were master in mathematics, I think so, because you are electronics engineer. You have to be more knowledge. You should have more knowledge about numericals and the mathematics. Okay, so you are aware about that. I need not to explain more why it is t/2, why it is t minus t1, why it is t1, all these things. But little bit I am discussing here. It's need here. So it's a t1, it's a t/2. तो ये जो t होगा ना मिडिल पोजीशन पे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या है बोलो, t1 लेंथ है. मिडिल t minus t1 होगा सर. Very good, t minus t1, that I have written here. You every time judge whether I have written correct or not. So that Yes, should sir. be t plus t1, correct. Sometimes it may happen, I am writing when I am writing, sometimes it may written some error because that may be the slip of pen. Okay. So that is called the typo error. That is called the typo error. That is not the conceptual error. That is called the typo error. So t plus t1 and that is t plus t1. तो ये क्या होगा, 3t/2 होगा, correct. That is t/2. Okay.
So that position should be 3t by 2. इधर भी सेम होगा, दिस इज माइनस टी प्लस t1, इधर क्या माइनस t1. So बट सर that ये बोलो बोलो डाउट है तो बोलो. यस सर, यस सर। ओके, t माइनस t1 और t प्लस t1 का जो डिस्टेंस है वो तो 2t1 होगा ना सर, ये वाला ना. लेंथ इसका सर, हाँ राइट साइड। हाँ, ये राइट साइड, हाँ हाँ हाँ, ये 2t1 होगा लेंथ. ठीक है, ये देखो ये छोटा दिखा रहा है, लेकिन you have to consider all those errors. That is the minor errors. Okay, so drawing error, because these pulse all are having the same length. Okay, because it's a periodic one, isn't it? I have told you it's a periodic one. Okay, Babu, so it's a periodic one. So now you have to find out AK values. Okay, Sir, AK values. So what is the sir. relation I have written over the analysis equation? AK is equal to 1 upon t minus t by 2 to plus t by 2 xt e to the power minus jk omega naught t. So when we go for discussing inverse Fourier transform, don't confuse about that. In the inverse Fourier transform, you will get minus jk omega naught t. So don't confuse about that. That is a different issue. I will discuss in the Fourier transform analysis. So beautiful chapter we have to remain discussed. Okay, so Fourier transform is there. It's a beautiful chapter. तो देखो ये है फॉर्मूला एक Sir. इक्वल टू 1. हेलो सर। हाँ बोलो. सर प्लीज सर शो सर प्रीवियस स्लाइड सर। ये सर ये वाला सर। ओके सर इसमें सर जो राइट साइड सर t/2 है सर, ये वाला. जो मतलब सर पूरा सर अगर होल लेंथ सर t है, हाँ सर अगर होल लेंथ सर t है तभी तो ये सर t/2 हुआ है सर एक साइड, और एक साइड 3t/2 सर कैसे सर? ये देखो इस यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू है t/2 है, फ्रॉम मिडिल टू दिस पॉइंट Yes, t/2, तो t प्लस t/2 कितना हो गया Yes, 3t/2. करेक्ट, गॉट माय पॉइंट. ओके अप टू सर। यस सर। मिडिल t, और यहाँ तक क्या है t/2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम है, मिडिल से गैप तक, यस मिडिल से गैप तक क्या है t/2 है. सो t प्लस t/2 कुल मिलाकर 3t/2. वेरी गुड क्वेश्चन. So take Thank one you. example. Okay. So AK is equal to 1 by t. Everybody, I am repeatedly telling you, I will never mind. If you ask me the question, I will be more happy. So don't be shy, don't be silent about your query. Then not like that you have to create some noise during my class. I'm not asking that type of. Silent means you don't be shy about your queries. So 1 by t minus t by 2 to plus t by 2 xt e to the power minus j k omega naught t dt. तो xt का वैल्यू देखो माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2 तक. ठीक है, लेकिन देखो माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई तक वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट. लेकिन देखो माइनस टी बाई 2 से t1 तक और t1 से t बाई 2 तक यहाँ पे सिग्नल का कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग इज देयर. तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का फायदा नहीं है माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2 तक. तो तुम क्या करोगे, माइनस t1 से प्लस t1 करोगे. ठीक है, तो इसलिए 1 अपॉन टी माइनस t1 से प्लस t1 तक. और xt का वैल्यू क्या है बाबू, इधर माइनस t1 से प्लस t1 तक इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 है. करेक्ट, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया. Yes. और जो एक्सपोनेंशियल टर्म इट इज अनचेंज्ड, इट रिमेंस अनचेंज्ड बिकॉज़ वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द डेफिनेशन into dt. So it's a simple integration over there. Exponential e to the power x का e to the power x होता है divided by 5, suppose e to the power minus 5 के, so 5x तो divided by minus 5 हो जाएगा. So इसलिए it is integrating over time t. So इसलिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, माइनस जे के ओमेगा नॉट हो जाएगा. So 1 upon t at the outside it's a minus t1 to plus t1. I am not discussing here because you people are aware about the simple integration, definite integration. So you have done lots of mathematics in your plus 2 10 plus 2 levels. So it's a simple integration over there. So you put upper side a plus t1, you put lower side a minus t1. We have plotted here, so we got that one. So देखो itself is a negative, so plus t1 के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज